Hello friends, in our previous video, we learned the concept of Pythagoras theorem and also the concept of Pythagorean triplet, and we solved some examples of finding Pythagorean triplet by using its general formula. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट सीखा, फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट का कंसेप्ट सीखा और हम लोगों ने पाइथागोरन ट्रिपलेट के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए. कैसे सॉल्व किए? बाय यूजिंग इट्स जनरल फॉर्मूला. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पाइथागोरन ट्रिपलेट. आज हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट पे आधारित कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ओके, now what are word examples based on Pythagorean triplet? Word examples are nothing but the geometric applications, and we use these geometric applications in our day to day life. Okay, how? तो हम लोग कैसे यूज करते हैं ये geometric applications हमारे हर रोज की जिंदगी में? तो अभी हम लोग उसके word examples सॉल्व करके मालूम करेंगे. Okay, so now let's read the first example. Example 1. A ladder is placed against a wall. The bottom of the ladder is 3 meters away from the wall. The length of the ladder is 5 meters. Find the height of the wall reached by the ladder. Now, अभी इस एग्जाम्पल में जितनी भी सारी चीज़ें दी हुई जैसे कि वॉल, हाइट ऑफ द वॉल, लैडर, फिर वो इंक्लाइंड है, फिर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत फेमिलियर है, हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं. तो अभी ये एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो पहले तो मैं इसको ज्योमेट्रिक फिगर में कन्वर्ट करूँगी और फिर देन वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड देन वी विल फाइंड द आंसर. तो कैसे करेंगे? देखो, अभी इस एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है. एक वॉल है, ओके, ए बी, और हमें मालूम है कि एनीथिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दैट इज इट मेक्स 90 डिग्रीज एंगल विद द ग्राउंड. बी इज द बॉटम ऑफ द वॉल, तो यहाँ पे ही ग्राउंड है और इस ग्राउंड लेवल पे ये वॉल 90 डिग्रीज एंगल कर रही है, तो ये ए बी उसको परपेंडिकुलर हो गया. सो इन दिस केस ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. नाउ व्हाट इज बी सी एंड व्हाट इज सी? Ladder is given. AC is the ladder which is inclined to the wall at point A. Its bottom is at point C on the ground. This is the bottom of the ladder which is on the ground. Okay, and B is the bottom of the wall which is also on the ground. Okay, so BC is the distance between the bottom of the wall and the bottom of the ladder which is given as 3 meter in the example. तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर. ओके, और AC क्या है? AC लैडर है. AC इज द लेंथ ऑफ द लैडर विच इज गिवन एज 5 मीटर. ओके, सो ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल B is 90 degrees angle. What are the given things here? B is your 90 degrees angle. AB is not given, which is the height of the wall that we have to find it. Then AC is the length of the ladder which is given as 5 meter, and BC is the distance between the bottom of the wall and the bottom of the ladder which is 3 meter. Okay, and what we have to find? AB, that is the height of the wall. Now, as this is a right angle triangle and the lengths of two sides we know, the length of hypotenuse which is the length of the ladder and the length of BC also we know. So we will apply Pythagoras theorem here to find out the third side of the triangle. Okay, so by using Pythagoras theorem use करके हमें क्या मिलेगा? We know what is Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to AB square plus BC square, that is AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, now therefore we have AC square is 5 square which is equal to AB square, we don't know AB, plus BC square. BC square is 3 square.
So after solving this equation, because this is an equation, okay, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? ab square is equal to 5 square minus 3 square. Now 5 square is 25 and 3 square is 9. So 25 minus 9 which is equal to 16. So we got ab square is equal to 16. हमें क्या मिला? ab square is equal to 16. Now ab कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? 16 का स्क्वायर रूट लेके. Therefore ab is equal to square root of 16 which is equal to 4, because we know that square of 4 is 60. Therefore ab is equal to 4 meter. So we found out AB, that is the height of the wall, which is 4 meter, and we also know that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. So when you know two things, two numbers in a Pythagorean triplet, then you can easily find out the third number in a Pythagorean triplet by using the Pythagorean triplet. So by using Pythagorean triplet, you can easily predict the value of AB, but we have to solve it, we have to apply some procedure for it. So that is why we are applying Pythagoras theorem, and by applying Pythagoras theorem we found out AB. So height of the wall is 4 meter. This is how we have to solve the word examples based on Pythagorean triplet. इस तरह से हम लोगों को Pythagorean triplet के word examples solve करने चाहिए. Okay? In our next video also we will be solving some examples on examples of this type. Okay, till then, goodbye and take care.